Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will continue with the CAT level series and we will discuss some questions on error detection, right? Now, let's have a look at the first question. This says, John's and Mary's new car broke down on the way to the beach, leaving them stranded on the side of the road for hours, right? So, when we say when we use apostrophe, right? Firstly, you must know that the only punctuation that matters in error detection questions is which one is this apostrophe, right? So you have to take care of this apostrophe whenever it is there in any error detection question. Check for the rules, right? If these are obeying all the rules or not, right? So when we say A's and B's, then we are referring to individual things, right? If I say A and B's mothers, this means we are referring to two different mothers. One is of A and the other is of B. If we are talking about one common mother, suppose they are siblings and we are talking about common mother, then we have to say A and B's mother, right? So anyway, if we are talking here about different cars, then it should be new cars, right? If we are talking about a common car, then it should be John and Mary's new car, right? Either way, this part has the error and we will mark this as our answer. All right, so again, John's, if we are referring to here, the answer should be John and Mary's, right, new car, or John's and Mary's new cars, right? Either of these can be correct, right? So A is the part that contains the error, right? Moving ahead, data shows that married women spend on average over 7 hours a day doing domestic work, irregardless of their employment status, while men spend less than 3 hours, right? Now we know that this irregardless is not the correct word, right? You have to say regardless. Okay, so you have to make sure that when we are, see, ir and regard, again ir and less, both these mean negative, right? So you cannot have double negatives together. Okay, so you have to make sure that you are avoiding this mistake of using double negatives, right? This is wrong. Our error lies in part C. Okay, moving ahead, India's female labor force participation rate is declining for more than 20 years despite the share of educated women surging in this period, right? So now they say that for more than 20 years, अगर हिंदी में बोले तो पिछले 20 सालों से ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये गिर रहा है, ठीक है? तो पहले से गिर रहा है और अभी तक गिरता आ रहा है. So it should be has been declining. Okay, just take care that whenever we are talking about the continuous form, the perfect continuous form, and there is for or since, right? So we always have to use has been, have been, right? Terms like this should be the form of tense. Okay, so here the error lies in part B. Okay, we will mark this as our answer and move ahead. All right, now this says India's industrial investment in research and development are also lamentably low in most sectors other than pharma, right? So lamentably मतलब इसका आप मतलब ढूंढो कि क्या होता है lamentably का, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, बी में कह रहा है आर. अब आप सोचेंगे आर इससे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो आर करेक्ट है, बट एक्चुअली करेक्ट नहीं है, बिकॉज द सब्जेक्ट फॉर दिस आर इज नॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये इसका सब्जेक्ट नहीं है. इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता चलेगा? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या है लेमेंटेबली लो. लेमेंटेबली का मतलब आपने खुद देखना है. मैं टेम्पटोरियम आपको बता दूं, बट लेट इट बी, आप खुद ढूंढो, ठीक है? सो इसका क्या है बहुत लो इन मोस्ट सेक्टर्स अदर देन फार्मा, वो है इंडिया का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में. तो इन्वेस्टमेंट लो है, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंगुलर. सो इज द करेक्ट यूसेज हियर. वी शुड मार्क बी एज आवर आंसर. ऑल राइट,
Okay, moving ahead, a model has been identified to scale innovation, one which have eluded India for long. Again, we know that this verb, ये हाँ जो verb है उसके लिए subject क्या है, ये one. ठीक है, वन क्या है, वन तो हमें पता ही है कि सिंगुलर होता है, राइट. तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा. एरर हियर लाइज इन पार्ट डी, राइट. वी विल मार्क इट एज एन आंसर एंड मूव अहेड. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द वर्ब्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट. पहले उसका करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट चेक करो एंड देन यू मेक द वर्ब अग्री विद इट, राइट. एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स लाइक द अपॉस्ट्रोफी, राइट. और कुछ और चीजें हैं, ग्रामर के रूल्स हैं. रूल्स सबको याद हो जाते हैं, मतलब मेहनत से कर ही लेते हैं, बट एप्लीकेशन इज द वन दैट actually matters, right? So make sure that you practice as many mocks as possible. All mocks can be earned at iexambee.com using your B coins. आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हमारी वेबसाइट पर उतना ज़्यादा आप कॉइन्स कमाएंगे, और जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा टेस्ट आपके लिए ओपन भी हो जाएंगे फ्यूचर वाले, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अपना प्रिपरेशन को 50% फास्टर करें बाय फर्स्टली आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं उनको एप्लीकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो उसकी एप्लीकेशन ज़रूर सीखें, मॉक्स को प्रैक्टिस करें, एंड आई विल सी यू अगेन विद अ डिफरेंट वीडियो. Till then, if you have not subscribed to our channel, please do. Please press the bell icon to continue receiving the updates of the videos we bring for you.